A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to today's lecture. Today's lecture is about cholinergic antagonist. Just like cholinergic antagonist, we have already discussed in the previous lecture that cholinergic agonist, those drugs that act on the parasympathetic nervous system and mimic the effect of the parasympathetic nervous system. And today there is a reverse of that. Before proceeding toward the cholinergic antagonist, we must be known that what is antagonist. Antagonist is basically those substances, or in case of drug, those drugs that bind to the receptor, but instead of activating the receptor, it blocking the activity of that receptor. So कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या चीज़ है? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारे पास वो एजेंट या वो ड्रग होते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसा कि मस्करीनिक या निकोटिनिक जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, M1, M2, M3 and nicotinic, but they prevent the effects of acetylcholine and other cholinergic agonists. There are basically three classes of cholinergic antagonists. One is ganglionic blocker, anti-muscarinic agent, and the third one is neuromuscular blocker. So the first one is anti-muscarinic agents. Anti-muscarinic agents are basically those agents that bind to the muscarinic receptor but blocking the activity of that receptor. Cholinergic antagonists are also called as parasympatholitic. What does it mean by parasympatholitic? Parasympatholitic are basically those drugs or agents which bind to the parasympathetic nervous system but does not mimic the effect of parasympathetic nervous system. So the first class is anti-muscarinic agent. The other class is ganglionic blocker. Ganglionic blocker shows preferences for nicotinic receptor of sympathetic and parasympathetic ganglia. A third family of the compound is known as neuromuscular blocking agents, that is nicotinic antagonists, interfere with the transmission of afferent impulses to the skeletal muscles. So थर्ड क्लास हमारे पास क्या हुई? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. ये इनका जो क्लिनिकल यूज है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है. The following table shows basically the classification which we have already discussed above. That is, anti-muscarinic agent include acetylcholine, atropine. The left side is basically generic and the right side against them is the brand name. So anti-muscarinic agent include acetylcholine, atropine, benztropine, cyclopentolate, and glycopyrrolate, and so on. That is there in the table. The second class are ganglionic blockers, which include nicotine. And the third class include neuromuscular blockers, which consist of succinylcholine, vicodinium, mivacorium, phencoronium, and so on. So let's come toward the first class, that is anti-muscarinic agents. Anti-muscarinic agents are commonly known as anticholinergic drugs. The anti-muscarinic agents commonly include atropine and scopolamine, which block the muscarinic receptor and thus inhibition of muscarinic function. In addition, these drugs block the few exceptional sympathetic neurons that are cholinergic, such as those innervating the salivary and sweet glands. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि मस्करीनिक के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिशन के साथ साथ ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन को भी इनहिबिट करते हैं. लेकिन कौन सा न्यूरॉन? वो न्यूरॉन जो सलाइवरी और स्वीट ग्लैंड में जाके इनर्वेट करते हैं. Because they do not block nicotinic receptors, the anticholinergic drugs have little or no action on skeletal neuromuscular junction or autonomic ganglia. So इसका मतलब ये है कि एंटी मस्करीनिक ड्रग्स जो है प्योरली वो एंटी मस्करीनिक है, यानी उनकी निकोटीन या स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर या ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर कोई भी एक्शन नहीं है. तो निकोटीन एंटी निकोटीनिक एक्टिविटी इनकी कोई नहीं है. A number of antihistamines and antidepressants, mainly tricyclic antidepressants, also have anti-muscarinic activity. हमारे पास और भी बहुत सारे और ड्रग्स है जैसा कि एंटीहिस्टामिन्स और एंटीडिप्रेसेंट. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में हमारे पास कौन से ड्रग है?
ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टाइडिन है, नार्ट्रिप्टाइडिन है, रॉक्सीपिन है एंड डोथाइपिन. So they have also anti-muscarinic activity. Now site of actions of cholinergic antagonist. So this figure basically shows the sites where the cholinergic antagonist bind and thus cause their activity. The site of action of the ganglionic blocker has been shown that it binds to the nicotine receptors and thus inhibiting their function. The other class is neuromuscular blockers which are bind to nicotine receptor and thus antagonize their activity. So now basically there is a description of the drug that is known as atropine. Atropine is basically a amine extracted from belladonna alkaloid. It has high affinity for muscarinic receptors and binds competitively to prevent acetylcholine from bind. Atropine basically एक अमाइन है जो बेलाडोना अल्कलाइड से लिया गया है. मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं कि एट्रोपिन का मैकेनिज्म क्या है. एट्रोपिन बेसिकली मस्करीन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एंड कम्पिटिटिवली ये एसिटाइलकोलिन के साथ कम्पीट करके उनकी जगह ले लेते हैं. जब ये उनकी जगह आता है तो फिर एसिटाइलकोलिन की जो है ना वो एक्शन नहीं रहती, तो इसी वजह से एंटागोनिज्म की फिनोमेना यहाँ पर होती है. एट्रोपिन एक्ट्स बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली. Actions last about 4 hours. However, effects of topical administration in the eye may persist for days. एट्रोपिन की असल में जब हम जनरल यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन उनकी एक्शन जो है ना वो 4 घंटे तक रहती है, लेकिन जब हम आई में उनकी जब टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो दिनों तक भी उनका असर रहता है. Now come toward the action of atropine, mean the organ effect. So the organ effect of atropine are on eye, gastrointestinal, cardiovascular and secretions. On eye, atropine block the muscarinic activity in the eye, results in mydriasis and cycloplegia, unresponsiveness to light. एट्रोपिन का आई पर जो इफेक्ट है तो वो मिड्रियासिस और साइक्लोप्लीजिया है. मिड्रियासिस बेसिकली डायलेशन ऑफ पीपल, मतलब ये हुआ कि पीपल को डायलेट करते हैं. एंड साइक्लोप्लीजिया इनएबिलिटी टू फोकस फॉर नियर विजन. हम आगे थेरापेटिक यूज और इंडिकेशन में पढ़ेंगे कि साइक्लोप्लीजिक और मिड्रियाटिक इफेक्ट का फायदा क्या है, कि हम क्यों ये इफेक्ट लाते हैं या क्यों ये ऑर्गन इफेक्ट लाते हैं. इन पेशेंट विद क्लोज एंगल ग्लाकोमा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में राइज डेंजरसली. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाकोमा में हम एट्रोपिन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को जो है ना वो बढ़ाते हैं. तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो फिर ये आई के लिए ऑप्टिक नर्व डैमेज हमारे पास भी एक पॉसिबिलिटी होती है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एट्रोपिन has an isomer that is known as L-hyoscyamine that can be used as an antispasmodic to reduce the activity of GI tract. Atropine and scopolamine both are potent antispasmodic drugs available. So atropine has an organ effect on GIT, is slowing up the activity of the GI tract. Although gastric motility is reduced, hydrochloric acid production is not significantly affected. Thus, atropine is not effective for the treatment of ulcers. मतलब ये हुआ कि अगर हम अल्सर में एट्रोपिन को इस्तेमाल करें तो ये फायदेमंद नहीं होगा. क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है ना, एट्रोपिन से गैस्ट्रिक मोटिलिटी तो कम होती है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl प्रोडक्शन वो कम नहीं होती. अल्सर में हमारे पास मेन रीजन क्या होता है कि वो उसमें HCl सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एट्रोपिन तो HCl को कुछ करता नहीं है, तो इसी वजह से उनका इस्तेमाल अल्सर में बेनिफिशियल नहीं होगा. अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एट्रोपिन का इफेक्ट क्या है. तो एट्रोपिन produces two type of effect on cardiovascular system. One is at low dose and the other is at high dose. At low dose 0.5 up to 1 milligram, the effect
on heart, there will be a decrease in heart rate. This is due to blockade of a one receptor on the inhibitory pre-junction neuron. Higher dose, when we are dealing with the high dose, that is up to 2 to 4 milligram, so they cause increase in heart rate by blocking M2 receptor on SA node. Now secretion. Atropine block muscarinic receptors in the salivary glands, producing dryness of mouth, xerostomia. The salivary glands are exquisitely sensitive to atropine. Sensitive स्वीट एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिमिलरली अफेक्टेड। मतलब यह है कि एट्रोपिन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इनकी जो है ना वो एक्सेस वो टूवर्ड्स स्वीट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड और इस तरह लैक्रिमल ग्लैंड में भी इसकी इनर्वेशन हुई है। तो वहाँ पर जब ये इनको सिक्रीशन को जब ब्लॉक करते हैं तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। मीन के व्हेन एट्रोपिन ब्लॉक द सलाइवरी ग्लैंड रिसेप्टर्स, so there will be a dryness of mouth and hence the condition is called xerostomia occur. And when sweet gland secretions inhibited by atropine, the body temperature will be elevated, which will be dangerous in children and elderly patients. This table is basically showing the dose variation of atropine. When we are dealing with 0.5 milligram, so the effect will be a slight cardiac slowing, some dryness of mouth and inhibition of spitting. Atropine when used in the range of 5 milligram, so there will be rapid heart rate, marked dryness of mouth, dilation of pupil and some blurring of near vision. And when we are using atropine above 10 milligram, so there will be hallucinations, delirium and coma. Now therapeutic use or indication of atropine. So the most atropine used mostly in ophthalmic situations. Topically, atropine exerts both mydriatic and cycloplegic effects. Cycloplegic effect, what is cycloplegia? Cycloplegia is basically the paralysis of ciliary muscles present in the eye, and it permits the measurement of refractive errors without interference by the accommodative capacity of the eye. मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट हम क्यों लाते हैं? तो ये इसलिए कि जब हम आई की एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा कि रेफ्रेक्टिव एरर को डिटरमाइन करना या मालूम करना या फाइंड करना, सो उनके लिए हम ये मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट इसलिए लाते हैं कि हम क्या करें, हम आई की एग्जामिनेशन और कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये इफेक्ट तो ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे पास यूवाइटिक एक कंडीशन है, इसके लिए भी हम एट्रोपिनो को टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करिनिक्स साइक्लोपेंटोलेट एंड tropicamide have largely replaced atropine due to prolonged mydriasis observed with atropine 7 to 14 days and 6 to 24 hours with other agents. Phenylephrine or similar cholinergic drugs are preferable for pupillary dilation if cycloplegia is not required. अब अगर हमको साइक्लोप्लेजिया नहीं चाहिए और सिर्फ मिड्रियाटिक एक्शन चाहिए तो एक और ड्रग भी हमारे पास अवेलेबल है जो क्या है, फेनाइलोएपिरिनो। वो सिर्फ मिड्रियाटिक काज करता है लेकिन साइक्लोप्लेजिया काज नहीं करता। द सेकंड यूज ऑफ एट्रोपिन इज cardiovascular or uncardiovascular. So injectable atropine is used to treat bradycardia for varying etiologies. And the third use is anti-secretory. So it is sometimes used as anti-secretory agent to block the secretion in respiratory tract prior to surgery. Glycopyrrolate is also used for this condition. ग्लाइकोपाइरोलेट भी हम सर्जरी में रिलैक्सेशन को लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Glycopyrrolate basically 4 to 5 times more potent than atropine and it has less side effect on cardiovascular, on secretion and etc. secretion पर नहीं लेकिन कार्डियोवास्कुलर और सीनियस इफेक्ट हमारे पास जो है ना एट्रोपिन के साथ, तो ग्लाइकोपाइरोलेट वो इफेक्ट काज नहीं करते जैसा कि एट्रोपिन।
The last use of atropine is antidote for cholinergic agonist. Organophosphate poisoning. Atropine is used for the treatment of organophosphate poisoning. Of overdose of clinically used anticholinesterase such as physostigmine and is some type of mushroom poisoning. So atropine is also used as an antidote for cholinergic agonist. So that was some uses of atropine. Now pharmacokinetics. So atropine readily absorbed, partially metabolized by liver, eliminated primarily in the urine. मेटाबॉलिज्म इसकी लिवर में होती है और एलिमिनेशन यूरिन में एंड हाफ लाइफ अबाउट 4 आवर्स तक है. Adverse effect, side effect. So adverse effect or side effect are basically the effect are those effect of the drug which are unwanted or are not required. मतलब यह है कि साइड इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट है जो रिक्वायर्ड इफेक्ट की बजाय कुछ और इफेक्ट आ जाए. So depending on the dose, atropine may cause dry mouth, blurred vision, sandy eyes, tachycardia, urinary retention, and constipation. And then effects on CNS. Effects on CNS include confusion, hallucination, and delirium, which may progress to depression, collapse of the circulatory and respiratory systems, and then finally lead to death. Atropine may also induce urinary retention. The drug may be dangerous in children because they are sensitive to its effect, particularly to the rapid increase in body temperature. Atropine, the drug may be dangerous. So atropine बच्चों में हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है. जब बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है तो इनकी वजह से फिर में बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. So that's all about today's lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.